So, hello. We are live. Okay. Hello, all the viewers of Homeo Health channel and my students, colleagues, and everyone who are viewing right now our channel. I welcome you all after a very long period of time because due to some of the chaos, I could not make any live in the January month. But here we are with a very interesting topic again with a very special guest today. And I have been following him since very long period of time. मैंने उनको बहुत ज़्यादा उनके contents के ऊपर देखा and he is actually an inspiration. So basically let us start with the topic first कि आज हमने कौन सा topic select किया है. तो जैसे कि मैं students और practitioners के लिए even normal public के लिए कुछ ऐसे interesting topic homeopathic relatedly जो already लोगों को तकलीफ होती है results देने में या अच्छे रिजल्ट्स पाने में. तो ऐसे ही टॉपिक है माइग्रेन. आपको जब पता होगा आजकल बहुत लोग इसी चीज से प्रॉब्लम में रहते हैं कि हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम है. इनमें से काफी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि माइग्रेन एक्चुअली होता क्या है. माइग्रेन मतलब आधा सर पे जब दर्द होता है तो हम उसको माइग्रेन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या माइग्रेन सिर्फ उसी को कहा जाता है कि उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं. यही चीज को समझने के लिए आज के हमारे स्पीकर आने वाले हैं. माइग्रेन इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि लोग अपनी रेगुलर लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि प्रॉपर क्योर नहीं मिलता है उसका, ताकि लोग बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर्स का सहारा लेते हैं कि जो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. तो क्या होम्योपैथिक उसमें हेल्प करेगी? क्या होम्योपैथिक जड़ से उसको हटा सकती है? कितने हद तक होम्योपैथी उसको रिजल्ट देगी? कितना टाइम लगता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम सर से जानेंगे. सो टॉकिंग अबाउट टुडेज स्पीकर, he is having a vast achievements in his field, in this field of homeopathy, and I'm very happy to call him on my channel and making you all to gain a knowledge from him about the migraine and homeopathy. So talking about sir, today's speaker's name is Dr. Abdequaem Chimthanwala, and he is a very passionate about the cure and research work in homeopathy. And one more thing, he is a fourth generation in homeopathy. His family has been practicing homeopathy since 100 years. So that's a great achievement, that we got such a great speaker on our channel, and you should all be very proud of it because you are getting a lot of thing today from a very knowledgeable person today. And he has made a lot of research on different topics, but the major topics which I can share with you is migraine, coronary artery diseases, hypercholesteremia, chronic renal failures, liver cirrhosis, and also on diabetes and all, which are very difficult cases to treat in regular practice. Along with that, he has been practicing since 25 years at the Abdequaem Grace Healing Homeopathy at Mark Homeopathic Clinic and Pharmacy at Nagpur. Also, there is a branch in Vasi and Navi Mumbai with the same name, as well as he has in the Pune as well. He has been consulting all over the world, in the India as well as abroad, through the Skype online consultations. He has been a founder and chief consultant at Abdequaem Grace Healing Homeopathy, and been also a visiting faculty at Gondia Homeopathic Medical College and Hospital. He has presented various research papers and webinars and at national and international homeopathic seminars, like webinars conducted by Ayush, CCRH, Hamai, European Psychiatric Association, and others.
He has conducted the clinical meetings for the homeopathic physicians and classes for the students at Grace Healing Homeopathy Academy. He has bi-monthly online sessions for the homeopathic physicians internationally. During the weekly YouTube live and international live interactions with the homeopath, discuss the case cured with him and question answers in the homeopathic series. Now you can understand, you can learn further after our sessions through his YouTube channel as well as Instagram channel. And I'd let you know, I found his content to be very, very practical. And that's why I was eager to call him on my channel, because सर जो बहुत छोटे पॉइंट्स में भी जितना बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है प्रैक्टिसिंग पॉइंट के लिए. तो आपके लिए मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की लिंक सर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रख दी है, तो आप वहां से डायरेक्टली सर को लिंक कर सकते हैं. He has been an external examiner for Matra Medica and Homeopathic College in Gondia and Chandrapur. And talking about his achievements, so he has been awarded with the Best Humanitarian Assistant Project Award of GCI India. He has been a Best Environment Project Award of GCI India. He has contested for 3 international ASPAC awards in 2008. He has been even awarded with the Maharashtrian Ratna for his contribution in the field of homeopathy in 2022. So congratulations, sir. Recently you have been awarded. Best Thesis Award entitled Scope of Homeopathy in Hypercholesteremia and Coronary Heart Disease for PG Homeopathy, London in 2014. International Young Achiever Award at Nepal in 2009. And Bharat Gaurav Samman, India's Pride at New Delhi in 2008. So wow, sir, I'm very, very impressed with all this thing. I've got a chance to interview you today on my channel. So Dr. Chimthanawala, I welcome you on my channel, and we would like to hear you from your side, how you came through this journey of very important point. I have done at least 200 webinars in the past 2 years. Oh, sorry, sir, I've missed that. But yes, sir has conducted, even in the COVID, he has conducted a lot of webinars through his academy. Yeah. Yes. Yes, so we can start. Thank you. Thank you for the introduction. Welcome. As you said that we have just completed 100 years in the field of homeopathy. So it runs in the family, you know. And if you see migraine also, it is said that this migraine condition also runs in the family and it can affect all ages. Yes, sir. Especially it is written that more of female births are more likely to have migraine rather than male births. So female basically, of course, if we say female, then it's basically related to that menstrual history, the estrogen, progesterone. Everything which I say, what happens, it is very important to learn a subject which is more clinical and more theoretical mixed. I can give you a beautiful lecture on migraine, you'll be very impressed. But after you go from here, you'll say the lecture was wow, but in a practice, you're back to square one. Yes, sir. When we were, we were attending lectures 20 years back, and people used to present cases and they used to give the remedies. We used to feel we'll never be able to make that remedy because it was such a difficult thing to get to that remedy. Yes, so I've tried to simplify and relate that pathology and pathophysiology to homeopathic Matra Medica, which would be very easy for you to understand. Of course, in 1 hour, I cannot make you very genius in treating migraine, but you must have some entry points how to crack that case of migraine. Actually. Okay. Yeah. Yes, sir. सर पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली माइग्रेन होता क्या है? क्योंकि मोस्टली लेमन पब्लिक के लिए हेडेक भी माइग्रेन होता है, माइग्रेन भी माइग्रेन होता है, तो वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा एक्चुअली माइग्रेन होता क्या है. अभी आपको whenever we share a topic, like for instance हमारे पास cirrhosis liver का एक सेमिनार था, इंटरनेट सेमिनार. सो जी, I always say that अगर मेरे पास cure है, so I can speak better. Otherwise, we can speak anything under the sunlight because everything is there on the internet and the programs. Yes, sir. Migraine, I just started migraine clinic, I think 4 to 5 months back, especially migraine clinic, and we had fantastic results. I'll share some of the snippets for that. अब migraine होता क्या है? अभी आप 2-3 चीज ध्यान रखें माइग्रेन में. माइग्रेन बेसिकली एक है न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: विजुअल, सेंसरी एंड मोटर.
ओके हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। जी विजुअल क्यों है? कोई पेशेंट आकर बोलता डॉक्टर साहब मेरे को मेरे सामने आंखों के सामने से तारे दिखते हैं। यस कोई बोलता जब भी मेरे को माइग्रेन अटैक आने वाला तो मेरे को ऐसे बहुत कमजोर, आई फील वेरी वीक, आई फील मेरे को सो जाना चाहिए। जी कभी कभी क्या होता है मुझे माइग्रेन में चलता हाथ पैर कांपने शुरू कर देते हैं। जी ये डेफिनेशन है। इफ यू ओपन द मैथमेटिक, इफ ओपन द रेपिटरी, ये सब अपने में दिया हुआ है। यस I think everybody will appreciate that whenever you see zigzag vision or sparks and lights before a headache, we have यस remedies. We have cyclamen. So we have so many remedies which are so very closely related to the definition of migraine. यस It is not always कि भी migraine के अंदर एक ही symptom follow करेंगे. That's the specialty of migraine. No, I'll not discuss the types of migraine और होता क्या है. जी In a general sense, migraine basically क्या होता है? जब भी हमको migraine आने वाला होता है, it is very intense. The pain is very throbbing. It is characterized by 3-4 things which are very very common in migraine. ये यस आपको remember करना बहुत important है. First है nausea, second है vomiting, difficulty in speaking. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर पे अगर माइग्रेन होता है तो मम्मी बोलती है डॉक्टर साहब मेरे लड़के को शायद अटैक आने वाला हो, 2 दिन से बात बराबर नहीं कर रहा, टक रहा है, जी समझ जाना कुछ होने वाला है। और आप बोलते हैं इसको, आगे हम बात करेंगे। जी फिर है टिंगलिंग और नमनेस। डॉक्टर जी साहब इतना पेन होता है कि मेरा पूरा सिर सुन पड़ जाता है, मेरे को किसी से मारा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जी सो व्हेनेवर देयर इज पेन विद नमनेस वी हैव फैंटास्टिक रेमेडी, प्लेटिना। ओ These are very, very interesting entry points of migraine. We'll discuss further if we have time also. And यस the सर most important is sensitive to light and sound. ओके एक माइग्रेन पेशेंट अगर क्रॉनिक माइग्रेन हमारे पास आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अगर बाई चांस एक लेडी आती बोलते मेरा हस्बैंड तो पूरे कांच का सामान है सर, आई आस्क व्हाई? अरे इनको लाइट हो तो तकलीफ, इनको म्यूजिक बजाओ तो तकलीफ, राइट इनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो तो तकलीफ, फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। He's become like a brittle, इसलिए कांच का, he's become brittle as glass. That's migraine. इतना severe one side headache with nausea, vomiting, tingling, sensitive to light and sensitive to noise. That जी is a most debilitating condition of migraine that runs the whole family. ये ओके important है migraine का definition. Of course, there are a lot of other definitions, but for a layman and for a doctor, this is sufficient to understand, because when we speak about homeopathy concept, I relate every symptom to miasm and every symptom to metromedy. राइट Simple as a migraine ध्यान रखिए. Okay. Then see there are types: primary, secondary, cluster headaches, and vascular headaches. We'll not go into detail because we're not teaching exactly migraine. We यस want migraine का एक अंदाज आना चाहिए migraine क्या है and the remedy then. Okay. yes sir Yeah. so sir you told ki it is a family hereditary variety migraine is usually in hereditary तो Yeah. सिर्फ हेरिडिटरी एक ही कारण है कि और भी कारण आपने एनकाउंटर किए हैं या Yeah. मतलब So I told one of the cause, maybe it runs in the family. ओके One of the causes, there are basically, if you see migraine के अंदर अगर आप देखेंगे तो it is basically the abnormal brain activity. ओके How do you know abnormal brain activity? That means the nerve signals, the chemicals, and the blood vessels in the brain have a problem in appreciating a normal response. ओके अब आप पूछेंगे कॉज माइग्रेन से कैसे डायग्नोस करेंगे? पेशेंट आकर डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन है, जी देन वी सी आपको किसने बताया? बोले सीटी स्कैन कराया, नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला माइग्रेन है। राइट See, all headaches are not migraine, एग्जैक्टली but headache symptom may be one of the symptom of migraine. यस Understand that. So there is no definite pathology, what you call investigation के आप investigate कर ले कि मुझे migraine है. There is no scan, there is no blood report, but यस it depends on the history and depends on the intensity and the severity of headache. It depends aura क्या आ रहा है और headache के टाइप पे क्या हो रहा है. जी बहुत पेशेंट आपको बोलेंगे डॉक्टर साहब जब भी मुझे माइग्रेन आने वाला होता है ना, मेरे को उल्टी का सेंसेशन होता है, नौशिया शुरू हो जाता है, एंड वी हैव अ रेमेडी. यस सर There is no classical investigation, it is basically on clinical grounds. That is migraine. Okay. जी सर सर कॉज कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स Yes. आपने अगर नोटिस किया अपने प्रैक्टिस में तो अभी इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस में ट्रिगर. यस और ट्रिगर आपको जानना इसलिए जरूर बिकॉज अभी होम्योपैथी आया है. हम्म See, allied sciences treatment is so simple. Sometimes you feel that अगर हम बाई चांस एमबीबीएस डॉक्टर तो बहुत इजी होता है, कोई टेंशन यस नहीं. Just एग्जैक्टली prescribe, finish, the remedy is finished. If you give a 3 months course, headache 6 महीना नहीं आएगा. Patient comes again the same course. No एग्जैक्टली stress. The patient never asks, "सब कब ठीक होगा?" जी He will never ask the doctor. हमसे जरूर पूछेगा कब ठीक होगा, कितना एग्जैक्टली टाइम लगेगा. In any disease, यस तो एक ट्रिगर फैक्टर डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. राइट एग्जाम्पल देता आपको.
मेरा और एक बार एक सेमिनार था माइग्रेन का, and she was a very senior homeopath. So when she started on YouTube, I said, "Are you told me at 6 o'clock? Now it is only 5 o'clock, so I'll not be able to take it now. Postpone it 1 hour." I said, "Sir, मैं नहीं कर सकती सर, आपको अभी लेना पड़ेगा, मैंने अभी आपने देखा है." And she suddenly started panicking, and she said, "Sir, मुझे तो headache होना शुरू हो जाए." That is can be a trigger point for migraine. Right. This lecture is at 6 o'clock. If I am that personality, most sensitive personality, I'll say in the morning, my God, ये migraine का कैसा करूंगा, कैसा होगा? The whole day is wasted. Yes. And my missus says, don't take lecture because आपको headache हो जाता है. Lecture के पहले भी, तो lecture अच्छा हो तो you are so excited कि अच्छा हो, फिर भी headache हो जाता है. Right. That's also trigger factor for me. See, everything the patient tells is a symptom to us. Trigger factor सबसे first is light. Migraine patient में light. Simple, अगर migraine की history है, torch लेना और patient के सामने से रख देना. Put in the forehead of the patient. After 10 minutes, you start getting pain in the head. Oh. That is the sensitivity of migraine. I'll tell you homeopathy aspect importance. So trigger factor important. Lights. Second is severe heat. A migraine patient will always tell you 99 of 100 times that whenever I go in sun, I have headache. Right. मैं धूप में जा ही नहीं सकता. Now, don't expect the patient to tell you that when I sit near the stove, I get headache because homeopathy is symptom. Well, just go beyond that stove and beyond that and understand migraine. Yes. Excessive stress. Right. Why it is important? Stress. No, you can't define stress. अब stress किसको आएगा? The persons who are very sensitive, the persons who get excited very easily. So this sensitivity part, keep in mind, because I'll come to that and you'll be so surprised that such a simple approach and you can cure a lot of cases. So excessive stress. Even stress presenting a webinar, I have completed 200 webinars, but when I started, there was always an anticipation कि लाइट तो नहीं जाएंगे, इंटरनेट तो नहीं चले जाएंगे, बराबर होगा कि नहीं, लोगों को समझेगा कि नहीं, बहुत टेंशन रहता है. And if you're a sensitive and a migraine personality, you start getting heaviness of the head and then pain in the temples, and you say, "Oh my God, now what will happen?" This is stress. Right. Stress and loud sound. Yes. If a migraine patient is traveling in a train, especially I have a clinic at Bombay, so I said, whenever I go in local, sir, I have to make sure that I put a cotton in my ear because इतनी आवाज आती है, हाथ पहुंचते पहुंचते मेरे हेडेक हो जाता है. Right. Loud sound, light, stress, change in the sleep pattern. Whenever you go out of India, come out of, there's a jet lag, and that patient says, मेरे को तो हेडेक होने वाला है. मेरे को दवा दे दो, मेरे को हेडेक होने वाला है. ऐसे कुछ दवा दो कि हेडेक होना. This is very important. And one thing very common is unusual smell. Exactly. अगर बास आ गई यानी से बोलते हैं ना, मेरी ये जो बास है ना डॉक्टर साहब, वो दिमाग में चली गई. Right. That Many is my yeah. And in winters, patient says, मेरे को सर्दी नाक में नहीं, मेरे को इतनी ठंडी होती नाक से मेरे सर में सर्दी चली जाती. मेरे सर्दी के ठंड के वजह से मेरे को हेडेक होता है. मेरे को ठंड नाक में नहीं सर में लगती है. वो पूरा ठंड जमा हो गया है ना सर में. And you know the beautiful remedy you must think about in this case, very rare thing about sister scan. Sister scan. Yeah, try that remedy. Not have that cold air. Yeah, yes. Cold. Everything cold is sister scan. I'll give you some important remedies also before that. And of course, then there are others. These are 4 or 5 very important things. And skipping meals. Yes. If you see the repertory, go in the stomach and abdomen chapter, gastric headache, the remedy is there. But there are a lot of remedies. Then you can have smoking, then you can have alcohol, you can have traveling. There are a lot of trigger factors, but this is very important. Yes. This is very, very important. Especially, I had cases where the patients used to come and say, previously in my clinic, आपके क्लिनिक में एसी इतना ठंडा रहता है पता है. When I come from outside और अंदर, तो मुझे हेडेक हो जाता है. I said, "Oh my God, the change of temperature also can cause headache." Yes. So this is migraine is basically a person who is a very sensitive and a very emotional personality. And we have rubrics for that. If we have time, I'll share some rubrics and you'll. Sure. A patient comes to you, go to that rubric and you get the remedies. It's so easy. Right. Of course. And last thing, which I have encountered so many times in the practice, the patient says, "I cannot do gym. Whenever I do gym, whenever I do exercise, I get headache. So I cannot do gym." Okay. So increased physical activity also will cause migraine headache. So these are the basic, what we call causes of migraine that you should remember. Of course, there are a lot of other things like taking oral contraceptive pills also can cause migraine. But I have seen in this many of cases where migraine is very common. And this gym part, I had a patient where he says, just thinking about doing an activity or walking or doing a gym causes headache to me. Oh. Yeah.
Sir, And how can we elaborate this symptom yeah, the patient so to? there are two remedies which I have found in most of the cases will work. Write Yes. down in your mathematics and check in your practice. One Okay. is sulfur iode and second is thyroid. Sulfur Even iode. sulfur, even slight activity causes migraine. Even And slight. He says that I'll take just go a morning walk, or I can't go. I'll have headache. The okay. patient, that means the patient has become so hypersensitive that even just a simple walking or doing gym, even thinking of that causes headache. Yes. Sulfur iode have given me fantastic results. If you have LM potency, keep it with you. Tell the patient to take repeatedly. In organoitis reading, you can repeat LM potency very frequently so that the repetition is no problem in LM potencies. So Yes. these are the remedies which you must think. There are other remedies for light, for sound. If we have time, we'll discuss. Sure. One thing which I want to discuss today in trigger factors is it has seen in research, and this is not very interesting, I just hear that magnesium deficiency can also cause migraine. Oh, this I mean, is. I hope everybody is understanding English or I must speak more Yes, in sir. Hindi. You can Well, continue, but if you can mix two languages, yeah. they would be more feasible for the non-homeopaths. एक रिसर्च हुआ था कि मैग्नीशियम कम होने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है. अभी होम्योपैथी के अंदर हम मैग्नीशियम अभी हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और हमको मैग्नीशियम देना है, किस कंडीशन में देते हैं. एवरी होम्योपैथ नोज दैट. अगर एक लेडी को बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया है, give जी. her Macphos and First. the pain goes. Yes, See sir. how it is linked. Magnesium deficiency may cause migraine. Oral contraceptives may cause migraine. Yes. Hormonal imbalance can cause migraine. Mood swings can cause migraine. Everything related to magnesium deficiency. Oh, See how Macphos works in case of cramps and how magnesium deficiency has been taken the cause of migraine in migraine. So simple Macphos also in acute condition would relieve migraine. See, don't always think about one remedy, that is belladonna. yes. Because if you study migraine, migraine के normal symptom है क्या है? Throbbing, pulsating, cutting, all types of pain headache, and belladonna causes everything. Yes. So just we give belladonna and say, यार दवाई काम नहीं कर रही. Not that. Every remedy has a very, very typical feature. We'll discuss later. But this magnesium part, everybody should remember because it. Now see, because you have never used Macphos, Maccarb, all rare Macbure. But if you have a magnesium personality, a dysmenorrhea personality, and you think that it comes under magnesium, understand if the patient has that headache problem or nausea problem or vomiting at the time of taking contraceptive pills or at the time menses, and you see that you have clicked the case by just one dose of magnesium. Right. Second question ये आता है. I think I'll take some more time, Dr. Vash. No, I sir. hope. You Okay. continue, please. One more question of magnesium. अभी हमने बोला magnesium deficiency. तो हम सबसे पहले करेंगे प्रिवेंशन. Yes. अब मैग्नीशियम बॉडी में आएगा कहां से? Right. अभी वी आर नॉट दैट कि हम मैग्नीशियम बाहर से ले लिए एलोपैथी सामान के पे मैग्नीशियम ठीक हो गया. जी. ओके. अभी मैग्नीशियम आएगा कहां से? जी. अगर आपने कैंट में पढ़ा होगा कैल्केरिया का, तो कैंट ने लिखा है कि दोस केसेस हु हैव बीन टेकन लॉट ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट बट स्टिल हैव बिकम वेरी वीक एंड थिन आर क्योर्ड विद अ सिंगल डोज ऑफ कैल्केरिया कार्ब. यस. सी इफ यू ओपन कैंट्स मैथमेटिक्स, अभी मैग्नीशियम, अगर आपने मैग्नीशियम अच्छा कर दिया तो हो सकता है कि आपका डिस्मेनोरिया भी ठीक हो जाए. राइट. सी एवरीथिंग होलिस्टिक. व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल. बोनी क्वेश्चन कैंसर. यस सर. अब मैग्नीशियम आएगा कहां से? सिंपल. सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का में रहता है बादाम, आलमंड्स. बट हमारी आदत क्या है? काजू खाने की. Yes. It is more tasty, Yes. especially salted ones. Right. Which is more bad. वो और खराब रहता है बॉडी के लिए, सॉल्ट रहता है. Exactly. तो अगर आप बेसिकली आलमंड्स खाते हैं, आप सीसम के सीड्स आते हैं, Yes sir. तिल, तिल. उसके अंदर भी बहुत मैग्नीशियम रहता है. Right. मिल्क में मैग्नीशियम रहता है, एग्स में मैग्नीशियम रहता है. एंड दोज हु आर डूइंग डाइटिंग दे ईट लॉट ऑफ पीनट बटर, यू नो. Yes. उसके अंदर भी मैग्नीशियम रहता है. Right. सो अगर आपने ये अपने डाइट में रख दिया ना, तो वैसे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कम हो जाती है. और बाय चांस अगर आपके पेशेंट को वो है, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों कंडीशन ठीक कर लेते हैं. दैट मेंसेस प्रॉब्लम एंड माइग्रेन आल्सो कुड बी टेकन केयर ऑफ. Right. This is very important to understand. Rather than giving medicines, we have this also. Yes sir.
Okay, are we through the trigger factors और कुछ explain करूँ? No, sir. It was actually very, very interesting to know about the magnesium deficiency. ये हमने कभी point सोचा नहीं था. तो I think new जो homeopaths हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा. It's very good learning for them also. सर आपने जैसे कहा कि कुछ पेशेंट सीटी स्कैन करवाते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो ऐसा कह देते कोई भी डॉक्टर कि माइग्रेन है, राइट? तो एक नॉर्मल हेडेक से किस तरीके से हम माइग्रेन को डिफरेंशिएट करें, एंड सेकंड कुछ स्पेसिफिकली कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स करवानी होती है या डायरेक्टली हम माइग्रेन जस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली अगर माइग्रेन है तो डायग्नोसिस के बहुत इजी 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. माइग्रेन हेडेक मोर सेवर वन साइड हेडेक रहेगा, वन साइड रहेगा, अगर लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा या टेम्पल में रहेगा, कोई भी वन साइड रहेगा. माइग्रेन हेडेक बेसिकली मस्ट हैव or it is always has the nausea and vomiting part. जी. Migraine headache has that visual disturbance and sensory disturbance also. Okay. A simple headache will not have any other symptoms. Right. A simple headache can be a simple vascular headache, a simple headache because of some excitement, because of some trauma, because of some acute shock or stress or anything which comes and goes. Right. It is not repeat. If this gets repeated again and again, then it's called as a migraine headache. One thing in trigger factor that I forgot to tell you, and you must remember that, that is the moon phase. Right. कुछ पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब मेरे को हेडेक सिर्फ महीने में 2 ही बार होता है, बस 2 ही बार, इतना क्लासिकल होता है, ये तारीख और ये तारीख. और जब हम यंग पेशेंट रहते हैं बोलते हैं क्या सिम्टम मिला, इट इज पीरियोडिसिटी. वाह, अब हमको दवाई चाहिए पीरियोडिसिटी, बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट दैट मून फेज. फिर हम 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता. देन यू स्टार्ट स्टडीइंग होम्योपैथी एक्चुअली आफ्टर यू पास योर एग्जाम्स, और पता पड़ता है मून फेज में बढ़ रहा है. एंड देन देयर आर वेरी गुड रेमेडीज वेयर एग्रेवेशन मून फेज, एग्रेवेशन फुल मून, एग्रेवेशन न्यू मून, और एग्रेवेशन वैक्सिंग और एग्रेवेशन वेनिंग. ये होम्योपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है. जी. अभी एक स्टेप हम आगे जाते हैं. मैंने आपको बताया मैग्नीशियम का. एक स्टेप हमको पूछना जानना जरूरी है कि ये माइग्रेन को अवॉइड कैसे करना. जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइग्रेन को अवॉइड. तो हम अवॉइड कैसे करेंगे? जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको पूरे मिनिमाइज कर दीजिए. राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवॉइडिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन इज टर्न ऑफ द लाइट्स. ओके. अभी टर्न ऑफ द लाइट्स फॉर अ लेमैन ठीक है, आप आंख बंद करके सो जाइए, बट फॉर अ होम्योपैथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है? एनीबडी? और फॉर अ डॉक्टर उसका इंपॉर्टेंस क्या है? If he gets amelioration, then we can think of the medicine which is relieving the complaint. So we can give more specific remedy or more minimum remedy for that purpose. अब इसके आगे हम जाएंगे थोड़ा. Okay, so a homeopath what to do? अगर आपका रूम बहुत डार्क है तो आपको अच्छे से नींद आएगी, या आपका बाई चांस एक लैम्प जल रहा है या खिड़की खुली तो नींद अच्छी आएगी. किस पार्ट में नींद ज्यादा अच्छी आती है? जब डार्कनेस ज्यादा होती है. यस. इसलिए हम ट्रेन में, प्लेन में क्या पहनते हैं? ब्लाइंड्स. यस. पूरा ब्लैक. व्हेनेवर देयर इज टोटल डार्कनेस, हमारा एक हार्मोन रहता है मेलेटोनिन. यस. वो सीक्रेट होता है. एंड मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड, इट्स अ स्लीप हार्मोन, नींद में आ जाएंगी. एंड इट हैज बीन रिसर्च दैट द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज मेलेटोनिन आल्सो. ओके. सो हमको थोड़ा होम्योपैथी से भी ऊपर जाना पड़ेगा, मेडिकल साइंस में, कि बेटर बट आके नॉर्मल सिम्टम आप मत प्रिस्क्राइब करना. यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम फेल बिकॉज नॉर्मल है. अभी हमको देखना है कि मेलेटोनिन जितना अच्छा निकलेगा उतना ऑटोमेटिक स्लीप अच्छे आना शुरू हो जाएगा. बट आज की तारीख में हम सोते हैं आई थिंक 4 घंटे और मेहनत करते हैं 20 घंटा. यस. मेलेटोनिन हमारे बॉडी में निकलता ही नहीं है. उसको टाइम ही नहीं बेचारे के पास. मेलेटोनिन ऐसा हार्मोन है कि हमारे बॉडी को पूरा रेगुलराइज कर देता है, सर्काडियन साइकिल भी ठीक कर देता है और बहुत कुछ एलिमेंट्स ठीक कर देता है. दैट मीन्स अगर आपको माइग्रेन अवॉइड करना है तो एक नॉर्मल स्लीप भी आपको मिल गई तो माइग्रेन आपका ठीक हो जाएंगे. जी. सो उसके अंदर, क्योर के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पेशेंट हैव अ गुड नाइट स्लीप. राइट. शांति से सोइए, लाइट वेट बंद करके सो जाइए. सोशल मीडिया पे मत रहिए, मत देखिए कि कितने आपको व्यूज आए और कितने आपको फॉलो कर रहे हैं. एग्जैक्टली. आई डोंट सी, बट माय चिल्ड्रन से डैडी अभी आपका बहुत अच्छा लाइव हो रहा है, आप इतने व्यूज आ गए, मतलब फॉरगेट द व्यूज. सी, सो दिस इज द जनरेशन वी आर, नो, दैट टेंस के इतने व्यूज क्यों नहीं आए. सो देन वी गो टू सिफिलिटिक पार्ट, नो. हम फोटो लेंगे, रेलवे वो ट्रेन आ रही है उसके बाजू में जाकर कि सिफिलिटिक फोटोज ना, कि व्यूज ज्यादा नहीं चाहिए. सो मोर यू बिकम सिफिलिटिक इन सोशल मीडिया, द मोर डिजीज्ड यू आर. एंड दैट्स व्हाई
you have specs or refractive errors at a very young age that we didn't have before. और बहुत बार आपको आके बोलेंगे बच्चे, यार मम्मी मैं जब भी बहुत पढ़ता हूँ ना मेरे को हेडेक शुरू हो जाता है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टडिंग, बिकॉज इतना सोशल मीडिया देखते हैं कि आंख में इतना स्ट्रेन आ जाता है, हेडेक स्टार्ट्स. सो आपको अभी हेडेक आएगा कि मुझे हेडेक आंख में होता है, पता है, फिर यहाँ होता है, फिर पीछे जाता है. दैट इज माइग्रेन. दैट इज ऑल्सो माइग्रेन. That is the beauty of understanding the whole disease concept in relation to medicine. Tell that child, give Phytum, tell the mother, इसको 7 दिन तक अच्छा नींद आना चाहिए और कुछ फर्क पड़ जाएगा, उसको फर्क पड़ जाएगा. And I've tried in my practice. Exactly. You also try this because say, as you progress in life, as we progress, you have to have some compensation. You know, body compensate करने वाली. So ये आजकल ये headaches जो आ रहे हैं ना बच्चों में, that's because of this social media. Yes. तो पहला मैंने बताया अवॉइडिंग माइग्रेन्स, टर्न ऑफ द लाइट्स. सेकंड एक ट्राई करना टेम्परेचर थेरेपी. अप्लाई हॉट और कोल्ड कंप्रेसेस ऑन द हेड एंड नेक. उससे भी माइग्रेन कम होता है, बिकॉज देयर आर द आर्टरीज, द वेन्स आर डायलेटेड इन माइग्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ थ्रॉबिंग एंड पल्सेशन. सो यू अप्लाई दैट कोल्ड फर्मेंटेशन, हॉट एप्ली कंप्रेसेस, नो, ऑटोमेटिकली वो कम होना शुरू हो जाता है, एंड यू गेट रिलीफ इन हेडेक्स. This is the early stage of migraine. And last thing, you can sip a caffeinated drink. Yes. बहुत पेशेंट आप बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब आज बहुत थक गया, हेडेक हो रहा है, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए. Actually वो इतना करता है. Yeah, तो चाय basically it contains caffeine. Yes. Okay, तो चाय पियेंगे तो मजा आएगा. आप पूछेंगे कितना चाय जिससे हेडेक ठीक हो जाए, तो ऐसे ये लगाया गया कि 12 कप चाय पियेंगे तो उतना कैफीन मिल जाएगा, पर इतना आप चाय पियेंगे तो एसिड हो जाएंगे. राइट. सो ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखने कि आपको अवॉइड क्या करना है. एंड इफ यू गो ऑन अवॉइडिंग, कैन आई गो फर्दर? यस सर, यू कंटिन्यू. अभी हम बोल सकते हैं मे बी अवॉइड कर 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं बोल सकता हूँ अवॉइड स्ट्रेस. यस. अब स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं. इट इज इजियर सेड देन डन, ऐसा बोल सकते हैं वो. इसलिए वो पार्ट बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है. राइट. कभी कभी क्या होता है कि when you try to avoid light, you try to avoid music which you cannot avoid. एक चीज आप हो सकते देख सकते हैं कि pay attention to your sleep patterns and pay attention to basically what food do you eat. Yes. In migraine that is also very important. बहुत बार पेशेंट आपको बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को जब सर दर्द होना शुरू होता है मेरे को लगता है कुछ खट्टा खा लूं, स्प्राइट पी लूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. खट्टा खाने से, नींबू खाने से किसी को अच्छा लगता है. यू विल गेट टू नो, इन प्रैक्टिस आपको बड़ा मजा आएगा सुन के. ये सब चीज आपको देखना है कि आपका फूड हैबिट्स क्या है. नहीं तो पेशेंट आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं इतना माइग्रेन. एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरे को देयर वाज बेसिकली अ कपल, और वाइफ को जब भी माइग्रेन होता था वो इतना खाना खाती थी, पूरा खाना खत्म हो गया. तो हस्बैंड से इतना खाना डॉक्टर साहब खाती है, ये पूरा खाना खा जाती बोले. तो मैं समझ जाता इसको भी हेडेक होने वाला. हेडेक के टाइम इतनी भूख बढ़ जाती है. एंड वी हैव रेमेडीज फॉर दैट आल्सो. ओके, यस, इंक्रीज्ड एपेटाइट ड्यूरिंग माइग्रेन और बिफोर अटैक. उसको लगता है आज तो डॉक्टर साहब मेरे को हेडेक होने वाला. सो व्हेन यू नो द प्रोड्रोम स्टेज, हम स्टेज पे आएंगे, अगर प्रोड्रोम स्टेज में आपको पता पड़ गया कि आपको हेडेक होने वाला है, तो जस्ट रिलैक्स, just take this hot and cold compresses, whatever is good, or just take a cold shower, shut off the lights, go and sleep, and you will feel much better. Exactly. That's how you can also try to avoid or try to minimize the attacks of migraine. Yes. Yeah, so, Dr. Varsha. हमने माइग्रेन के बारे में तो काफी कुछ समझा है. पेशेंट्स को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए वो भी हम समझ गए हैं, लेकिन होम्योपैथिक का माइग्रेन के केसेस में क्या रोल है? मतलब हाउ नॉर्मल पब्लिक कैन अंडरस्टैंड कि डू वी नीड अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड हाउ एफिशिएंटली इट विल हेल्प अस फॉर आवर केसेस. कैन यू एनलाइटन दैट? अभी सी होम्योपैथी हम देखेंगे तो आपके चैनल्स पे लेमेंस भी ज्यादा है, तो विल नॉट गो इनटू दैट माइग्रेन मायजम्स एंड ऑल. बट हेडेक के टाइम पे 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमको. जी, हमको डॉक्टर को ये बताना है, अगर लेमेन है या हम भी पेशेंट है अगर, तो एग्जैक्टली माइग्रेन के पहले क्या होता है, माइग्रेन के टाइम पे क्या होता है, और माइग्रेन के बाद क्या होता है. सो हम उल्टा शुरू करेंगे. एग्जैक्टली माइग्रेन के बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जी सर, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेन हैंगओवर. अभी आप बाई चांस दारू पी ली, बहुत आपको हैंगओवर हो जाता है. माइग्रेन भी इतना सीवियर हेडेक रहता है कि पेशेंट समटाइम्स गेट दी हैंगओवर ऑफ माइग्रेन, कि माइग्रेन के बाद
बहुत ज्यादा टायर्ड, डॉक्टर साहब मेरे को 3 दिन से इतना हेडेक था, मैं एक दिन सो गया और इतना चिड़चिड़ कर रहा था, इतना चिड़चिड़ कर रहा था 2 दिन से, बिकॉज मेरे को माइग्रेन अटैक में क्या, मेरे को समझता नहीं, मैं सो जाता हूँ, जी उसके बाद हैंगओवर रहता है। सो ये समझ लीजिए आप कितना पेनफुल कंडीशन है माइग्रेन, जी इसका इतना पेन रहता है बॉडी में कि द पेशेंट सफर्स फ्रॉम हैंगओवर। जी दिस सर। इज हैंगओवर माइग्रेन, एंड दिस यू हैव टू टेल योर फिजिशियन और डॉक्टर, बिकॉज इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है जो हम उसको दे सकते हैं कि इतना अटैक पेशेंट को कि बेसिकली उसको हैंगओवर रह जाता है। जी अब हम देखते हैं कि हेडेक के पहले क्या सिम्टम का इंपॉर्टेंस है। जी अभी मैं कंबाइन करूंगा लेमैन डॉक्टर्स के अंदर। एक रहता है प्रोड्रोम स्टेज, हम बोलते हैं उसको, जी जब पेशेंट को 3-4 चेंजेस मोस्ट ऑफ द पेशेंट गेट। वन इज इमोशनल चेंज, दैट इज आइदर डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी। और ये प्रोड्रोम के अंदर क्या क्या हो सकता है, पेशेंट आके बैठता है, डॉक्टर साहब कल हेडेक होगा। क्यों? मेरे को बहुत यॉर्निंग शुरू हो गई। यस और एक्चुअली आपके सामने करता है पेशेंट। जब हम बहुत 15-20 साल पहले डॉक्टर्स थे, हमको लगता क्या है, तो नॉर्मल है, यॉर्निंग होना, क्या हेडेक होता है, कि उससे किताब में लिखा है, बट लिखा वी है। नेवर यूज्ड टू अप्रिशिएट क्या है इसमें भी होता है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड, if you read the remedy amyl nitrate or kali carb, यस सर। both remedies, amyl nitrate is a fantastic remedy, underused remedy, but अगर आप amyl nitrate खोलेंगे तो yawning, काली कार्ब इज सच एन इंपॉर्टेंट रेमेडी कि अगर यॉर्निंग के और आइस पेन रहा तो आप केस टेकिंग की मत करो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए काली कार्ब देखे तो कहीं गेट फैंटास्टिक रिजल्ट विद काली कार्ब। यॉर्निंग, ओके amyl nitrate, fantastic remedies. If somebody has what you call, अगर आपके पास अभी बाई चांस ये होगा मैटरमेडिका ऑफ एलन स्कीनोट, ऑल सिंपल लिखा है। इफ यू हैव मैटरमेडिका का लेमन नहीं, तो मैं डॉक्टर्स को बताना चाहूंगा सिंपल एलन स्कीनोट खोल, इसमें लिखा है सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द हेड एंड फेस। यस और इतना ज्यादा सर्जिंग रहता है, हेड स्टार्ट्स थ्रॉबिंग, इतना थ्रॉबिंग का फेस पूरा लाल हो जाता है, फ्लशिंग एंड थ्रॉबिंग इन द हेड, एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स गिव बेलाडोन। यस इट इज नॉट दैट बेलाडोना में नहीं है, यस बट एमिल नाइट्रेट में ज्यादा है। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कितना हेडेक है, तो एक जी सोर्बिटेट की टैबलेट जबान के नीचे रख के देखिए कैसा हेडेक होता है। जी। रखना मत, बीपी कम हो जाएंगे। ओके। हाँ सर, ये भी बहुत डिस्क्लेमर देने की जरूरत होती है लोगों हाँ, को। इतना हेडेक होगा कि आप बोलेंगे मैं क्या कर लूं, मतलब इतना थ्रॉबिंग रहता है, इतना थ्रॉबिंग कि अभी पेशेंट क्या करेगा थ्रॉबिंग के टाइम पे। पेशेंट जाएगा बाहर खुली हवा में, पूरे कपड़े उतार देगा और सब बेड वेड सब, और ठंडे मौत में जाके बढ़ जाएगा। थ्रॉबिंग ना, थ्रॉबिंग मींस कंजेशन, तो उसको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए ना। दैट इज एमिल नाइट्रेट, इट इज अ फैंटा। और उसके बाद हेडेक के इतना थ्रॉबिंग होगा, वो ठंडी में जाएगा, उसको पूरा बॉडी से पसीना छूट जाएगा, इतना पसीना छूटेगा और वो शांत हो जाएगा, हेडेक ठीक हो जाएगा। दैट इज एमिल नाइट्रेट। It is the third and fourth line of Allen's keynote in या Amylase. एमिल नाइट्रेट Yes. इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट एमिल नाइट्रेट। सो आपको जब पेशेंट डिस्क्राइब करता है ना, तो ऐसे मत शुरू मत हो जहां नेचर क्या है, का Yes. गुस्सा का बता रहे, बोल रहा है, पूरा बता दिया आपने उसको, हेडेक पूरा आपको केस दे दिया उसने, अरे उसको ठीक तो करो पहले, फिर टेस्टिंग करना। वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट ट्रीट द एक्यूट एपिसोड में। और फिर पेशेंट क्या करता है पता है, Stretching. एमिल नाइट्रेट स्ट्रेचिंग, अरे Yes. इतना मस्त करता है। अपने को लगता है पेशेंट, अपने को डॉक्टर है ना, अपने ईगो आता है अपने सामने ऐसे कर रहा है पेशेंट, बट बेचारा एमिल नाइट्रेट पेशेंट का प्रॉब्लम ही वो है। Yes. And it is written in the Mater Medica, impossible to satisfy the desire. आप पढ़िए एमिल नाइट्रेट में। Yes. तो वर्षा, if you have Allen's keynote, I think I last have line. in my software, sir. Just a minute. You want which part? Yes. There is a profound and repeated yawning like Kali Carb. Yeah. And if I say it's a rapidly dilate the arteries and accelerates. No, but forget that. That is, उसमें लिखा है Allen's keynote में constant stretching. नीचे देखिए. just a minute. I'm just looking at it. Acts promptly by inhalations. No, constant stretching वाला. If not, उसमें तो बोरिक में हो, दो में से कोई भी एक. Exactly, I don't remember, but है एमिल नाइट्रेट में constant stretching. आप देखिए Allen's keynote, एमिल नाइट्रेट. I let me open the Yeah. boric as well. Just a minute. Let me do that. Okay. It may be given in Allen's keynote only. See Allen's keynote, Dr. Varsha. So I will not make a mistake in Allen's keynote. okay. Constant stretching,
एंजाइना पेक्टोरस के नीचे देखिए, एंजाइना पेक्टोरस के नीचे सर। 12th और 13th लाइन, जहाँ काली कार्प लिखा है उसका एग्जैक्टली ऊपर, प्रोफाउंड। Constant stretching for hours, impossible to satisfy the desire, would seize the bed and call for help to stretch. See, this is the beauty of maternity. This is the beauty. अब ये रेपिटेड में नहीं मिलेगा। Yes sir. सी, पेशेंट ने पूरा बता दिया केस देखिए, फिर आप पूछ रहे बेलेडोना क्यों नहीं काम कर रहा, कैसे काम करेंगे भाई, ये काम ही नहीं करने वाला। एग्जैक्टली वो लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग, ब्रैकेट में काली कार्प। This is the beauty of understanding your maternity and then correlating it to migraine headaches or whatever basically you're using that. This is important in homeopathy. Try to see, don't be a master in medicine. The people are in awe with your knowledge of medicine. What will you do with that? Yes. If I'm not able to give you some inputs, how will I be able to convince you कि migraine ठीक होता है? Right. एक केस है केंट का कि उसने कहा था कि a case of 22 years of migraine I cured in one dose. हम जब पढ़ते हमको लगता है ये क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है। But now I have a cases of 40 years duration, one dose of ferrum metallicum, 40 साल का migraine within a month गायब, never come back again. Yes. So this is the part of, इसलिए बताया yawning because अभी मैं हर चीज बताऊंगा तो will require 2 or 3 days, you know. Yes, yes. So dizziness, thirst, frequent urination, sensitive light, sensitive noise, ये सब अगर माइग्रेन के पहले होता है तो हमारे पास रेमेडीज है। राइट। Okay. फिर हम देखते हैं ड्यूरिंग हेडेक। अब ड्यूरिंग हेडेक पेशेंट को क्या हो सकता है, नौशिया है, पेशेंट बोले मेरी पूरी गर्दन अकड़ जाती है, मेरा नाक पूरा भर जाता है, मेरे को बहुत उल्टी के समान लगता है। Now these symptoms again are very important because we have remedies for that, you know, we have remedies for that। कि भाई नौशिया है तो रेमेडी चेंज, बहुत ज्यादा स्टिफनेस ऑफ नेक है तो रेमेडी चेंज, बहुत वॉमिटिंग एंड डायरिया तो फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट में इतना हेडेक होता है, सिर्फ इतना हेडेक होता है, पूरा फेस मेरा लाल हो जाता है और मेरे को लेटरिन भी लग जाती है, उल्टी भी आती है। इमेजिन अ कंडीशन कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, उसको लाल हो गया चेहरा, उल्टी कर रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है, और आपकी मदर आती है आपका दवा लेने, आप क्या दवा देंगे, व्हाट मेडिसिन विल गिव? आप रेपेटर्स करेंगे उसका नेचर कैसा है, क्या खाना पसंद कर रहा है, उसे टाइम नहीं है। No. So which remedy comes to your mind? One remedy, and that is belladonna. Yes. You understand? Belladonna. Patient बोलता है कि मैं जब आग की पलके भी ऐसे हिलाता हूँ ना तो भी दर्द करता है, तो मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता है। So don't always give brownia के aggravation motion better by rest. Don't give that. If you see belladonna, even moving the eyelids causes headache. Yes. और उसके साथ में एक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आई डोंट नो आप लोगों ने रिसर्च किया है कि नहीं, नक्सोमिक एंड कॉफिया क्रूडा। यस। अब कॉफिया क्रूडा अगर एलेन स्किनोड में आप देखेंगे तो एक्साइटमेंट कॉजेज हेडेक, और एक्साइटमेंट किसको रहेगा, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। सो कॉफिया क्रूडा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जस्ट बाय मूविंग द आईबॉल्स आल्सो यू गेट हेडेक। यस। सो दिस इज नाउ कॉल्ड एज कंपैरेटिव मटर रेमेडी, यू नो। I have suddenly jumped from what you call medicine to maternity. अगर आप एलन स्किनोड खोलेंगे, डॉक्टर वर्षा, सेकंड लाइन, I am already having the coffea cruda. Second line, coffea cruda, over sensitiveness. देखिए कौन sensitiveness, all the senses more acute, sight, hearing, smell, touch, taste, in a bracket, belladonna, chamomile and opium like. Opium. तो कौन सा मायासम हो गया है? ओवर सेंसिटिवनेस, आउट ऑफ कंट्रोल, नॉर्मल से ज्यादा सिफिलिटिक मायासम हो गया। सिफिलिटिक, यस। उसमें ओपियम भी है, चामोमिला भी है, बट बेलेडोना भी है। आपको ऐड करना है नक्सोमिका, चाइना एंड ब्रायोनियोल्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर मैटरमेडिका। अगर मैं और बेलेडोना के बारे में जानना चाहूंगा, आप बोलेंगे सर सबको तो हेडेक और वॉमिटिंग नहीं होगा, फिर बेलेडोना के रुकेंगे हम बेलेडोना के लिए जब तक हेडेक होता कि नहीं, वॉमिटिंग होता कि नहीं, लैट्रिन होती कि नहीं, तब तक रुकेंगे क्या? नहीं रुक सकते। बेलेडोना में दो सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जब मैं हेडेक होता है ना, मेरे को लगता है ऐसे मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ, बैलेंसिंग, इतना हेडेक होता है, या फिर ऐसे लगता है सर्फ के पानी के बुलबुले मेरे ब्रेन में चल रहे हैं, बबलिंग सेंसेशन एंड द बैलेंसिंग सेंसेशन, देन यू मस्ट थिंक अबाउट बेलेडोना। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ हेडेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली।
दैट इज बेलेडोना। यस। तो हम मैटरमेटिका पे जल्दी नहीं आएंगे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट मैटरमेटिक मैं सब भूल जाता हूँ, फिर मैं कंपाइल जाऊंगा तो आप शायद नहीं होगा। सो अपन पहले थोड़ा मेडिसिन पार्ट देख ले। तो हम समझ गए हेडेक के टाइम पे हमको क्या क्या देखना है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, यॉनिक का एग्जांपल दिया, वॉमिटिंग का एग्जांपल दिया, नौशा का एग्जांपल दिया। इससे क्या होगा कि हमारा केस टेकिंग थोड़ा इजी हो जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम वो पार्ट का तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट से। ओके, सो migraine hangovers, the prodromal phase and this phase basically very very important. Okay, और एक चीज माइग्रेन में ध्यान रखना, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेन, स्टे हाइड्रेटेड। एंड कभी कभी कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे को एक, बोलता है ना, मेरे को पुराने गाने बहुत मजा आती है, कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार चल रहा है, शांत गाने, मुकेश, मेरे को बड़ा मजा आता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूजिक थेरेपी, और समटाइम्स कॉल्ड एज मेडिटेशन ऑल्सो, कैन रिलीव सम ऑफ द माइग्रेन हेडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ओके, यस सर। डॉक्टर वर्षा, सर यस। वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब भी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं, XYZ कोई भी डिसीज हो, लेकिन स्पेसिफिकली माइग्रेन के अंदर, तो कितना टाइम लगता है एक अच्छे रिजल्ट्स दिखने में, और क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, क्या प्रोग्नोसिस रहता है एक माइग्रेन के केसेस में? वैसे एक केस आपने बोला 40 years एंड 1 month एंड इट वाज बीन क्योर्ड, बट एक लेमन पब्लिक को समझना हो कि जैसे कि लोग हमेशा कहते हैं कि होम्योपैथिक टेक्स अ टाइम, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। बट हाँ, एक लेमन पब्लिक को अगर हमको समझाना है कि हाउ लॉन्ग दे हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? सी वन थिंग इज दैट जितना जल्दी आप सिविलियम प्रिस्क्राइब करेंगे उतना जी जल्दी ठीक होंगे। जी। आंसर इज एज सिंपल एज दैट। इसमें दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपके पास पेशेंट आता है माइग्रेन का, ही विल डेफिनेटली कम विद वन ऑफ द अदर सिम्टम व्हिच आई हैव टोल्ड यू। यस। कभी कभी क्या होता है कि अक्यूट, अगर पेशेंट बोलता है कि अगर आपने पहले टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, और अगर आपका बाई चांस ही होम्योपैथी अगर आप माइंड सिम्टम लेके इंटरप्रेट करते हैं, तो एवरीबडी हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर अ नॉर्मल सिम्टम आल्सो। ओके, सो इंटरप्रिटेशन आप गलत कर सकते हैं माइंड के अंदर। बट जब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को बहुत म्यूजिक से तकलीफ हो रही है, पेशेंट बोलता है मेरे को बहुत साउंड से तकलीफ हो रही है, पेशेंट बोलता है मुझे बहुत स्मेल से तकलीफ हो रही है, तो वी हैव रेमेडीज। यस सर। वी हैव रेमेडीज वेयर अक्यूट सिम्टम्स के अंदर अगर हमको पता पड़ जाता है तो हम उसको कम कर सकते हैं। यस। वी हैव रेमेडीज वेयर द टाइप ऑफ हेडेक एंड द साइट ऑफ हेडेक अगर एग्जैक्ट पेशेंट बताते हैं हमको, तो हम ठीक हो सकते हैं। और राइट। जी बहुत बार मेरे वेबिनार्स में हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका अक्यूट दवाई इसलिए अच्छे से, लोग कभी कभी आपका अक्यूट दवाई सिर्फ नाम अक्यूट है, बट दैट कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ द पेशेंट हिमसेल्फ। एग्जैक्टली। और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो अक्यूट के बहुत आजू बाजू चलेंगे। अगर आप अक्यूट अच्छा प्रिस्क्राइब कर देंगे तो पेशेंट बोलेंगे चलो कम से कम हेडेक कम तो कर देता है, हमको एलोपैथी खाने तो नहीं पड़ती, हमको साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। बट आपने केस टेकिंग किया और अपने अक्यूट सिम्टम भूल गए, आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। अब पेशेंट ने बोला कि मेरे को कल बहुत टेंशन था इसलिए मेरे को हेडेक हो गया, बोले मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब एक होम्योपैथी बोलेंगे इसको भाई एलिमेंट्स ऑफ एंटिसिपेशन है, एक होम्योपैथी बोलेंगे इसको बहुत ज्यादा एलिमेंट्स फ्रॉम इम्पेशेंट है, एक पेशेंट बोलेंगे ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। तो आपका इंटरप्रिटेशन डिफर हो जाएगा, तो आपका रेमेडी चेंज हो जाएगा। माइग्रेन के अंदर अगर ऑरा है, अक्यूट सिम्टम है, तो उस पर देखिए आपको ड्रग मिलना ही मिलना है। तो ड्रग के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्यों ड्रग्स, अगर हमारे पास टाइम और 10 मिनट टाइम है मेरे यस पास, सर, है आराम से है, यू है। कैन कंटिन्यू। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसे मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत बार क्या होता है, सिम्टम नहीं मिलता, हम समझ लेते सिम्टम नहीं मिले हमको बाई चांस, तो मैंने आपको ट्रिगर फैक्टर बोला है, तो उसका ट्रिगर फैक्टर आप समझ लीजिए। पेशेंट को बोलिए भाई आपको बेसिकली अगर आपको पता पड़ा ट्रिगर फैक्टर उसका लाइट नॉइज है, तो उसको हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए, स्लीप दीजिए, मैग्नीशियम है तो खाने का दीजिए। ये सब ऑक्सिलरी मेजर्स आप करेंगे ना, तो मैक्सिमम पेन का इंटेंसिटी कम हो जाए। अब होम्योपैथी में क्या है, अगर इंटेंसिटी भी कम है तो पेशेंट बोला हाँ होम्योपैथी में टाइम लगता है, धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, तो जी। वी हैव सम ब्रीदिंग टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैग्नीशियम के बारे में बोला आपको, एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जिंजर, जिंजर इसको हिंदी में क्या बोलते यस। हैं? अदरक अदरक। अदरक। जी सर। ऐसा स्टडी में कहा गया है कि अगर बाई चांस आप अदरक लेते हैं तो इससे भी माइग्रेन हेडेक कम होता है, बिकॉज अदरक क्या करता है, नौशा भी ठीक कर देता है, वॉमिटिंग भी ठीक कर देता है। तो जो माइग्रेन के क्लासिकल सिम्टम्स अदरक पूरे 2 घंटे के अंदर कम कर देता है। जी। कभी कभी किसी पेशेंट को बोलते हैं कि चाय में थोड़ा अदरक एक्स्ट्रा डाल के पी लो ताकि आपको फर्क जल्दी पड़ जाए। ये भी एग्जैक्टली। आप ध्यान रखिए। सो क्या है, अगर आपको ड्रग नहीं मिल रहा है एक्यूट, तो आप बाकी की चीज अगर पेशेंट को बोलते थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो, नींद ले लो, कोल्ड कंप्रेशन ले लो, बात ले लो, मैग्नीशियम देख लो, अदरक देख लो, अगर वो भी हो गया ना, तो आपके सिम्टम डेफिनेटली बहुत कम हो जाते हैं।
और होम्योपैथी डॉक्टर के अंदर इतना क्वालिटी रहता है कि वो इतना पेशेंट को काउंसिल कर देता है केस टेकिंग के अंदर कि उसका माइग्रेन बेसिकली कम होना शुरू हो ही जाए. जी सर. बिलीव मी दैट केस टेकिंग इज हाफ द वर्क डन एज यस, टोल्ड बाय डॉक्टर केंट. बट एग्जैक्टली. केस टेकिंग में इंटरप्रेट कैसा करना है ये डिपेंड्स बेसिकली ऑन योर क्वालिटी ऑफ इंटरप्रेट. दैट वुड टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. डेफिनेटली सर. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन एवर यू आर टेकिंग अ केस फॉर अ लेडी, मेक श्योर टू आस्क headache in relation to menstruation. यस. Very, very important. If you have seen, there are a lot of ladies who have taken contraceptive pills because of some reason in life, because of some puja, because of some activity. और बोलता है जब भी मैं सर पिल लेता हूँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, बट क्या मेरे को हेडेक होता है. ठीक हो जाता है बट मेरे को थोड़ा हेडेक होता है. तो एक्चुअली अब डोंट ऐसे कैजुअल मत लीजिए सिम्टम को, समझ लीजिए उसको बाई चांस इस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के गड़बड़ में हेडेक हो रहा है, तो मेक श्योर यू बेसिकली ट्रीट दैट ऑल्सो. यस. कभी कभी कोई पेशेंट को बोलते ना अजीनोमोटो, यस. उससे भी बेसिकली हेडेक होने के चांस रहते हैं. इसलिए पेशेंट बोलता है ना, जब भी मैं डॉक्टर साहब बाहर नॉनवेज ये खाता हूँ ना, चाइनीज फूड, मेरे को हेडेक होने के चांस बढ़ जाता है, बट फिर बच्चों के लिए खाता हूँ. समझ लेना उसको एमएसजी का प्रॉब्लम है, अजीनोमोटो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो. एक बार एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मैं कभी मेरे जब भी मेरे फ्रेंड के खाना खाने आता हूँ ना, खाना अच्छा बनाता है, वहां से खाना खा के आता हूँ मेरे को खांसी शुरू हो जाती है. अरे ये भी अजीब ही सिम्टम कि फ्रेंड क्या खाना खाने गया तो खांसी शुरू हो जाती है. तो एक रेमेडी है पता है, जस्ट बाय द पेशेंट इज सो एलर्जिक टू पेपर और टू व्हाट यू कॉल विनेगर, स्टार्ट्स कफ. फिर मैं पूछता हूँ खाना क्या खिलाया था डॉक्टर साहब उसको, वो लेमन चिकन बहुत अच्छा बनाता है. एल्यूमिना 1M cured the case for rest of his life. Oh, This is the beauty of modern medical. right. Of course, this is not headache part, but just मेरे दिमाग में आ गया. Exactly, sir. थर्ड पार्ट इज Yes. स्ट्रॉन्ग स्मेल. अब बहुत बार अब पेशेंट मेरे साथ आता है, आई डोंट नो इफ यू कम ऑन माय वेबिनार, आया था पेशेंट, उसको 25 साल से हेडेक था. इतना हेडेक कि वो झंडू बाम की बोतल साथ में लेके घूमता है. जब भी उसको बात आती है ना, वो सुनता है, उसको हेडेक में फर्क लग जाता है. सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट बेसिकली हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रॉब्लम. सो हम बोल सकते हैं पेशेंट को, भैया जहां स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आपको लगता है बहुत परफ्यूम, मत जाइए. सो ऑटोमेटिकली उसके माइग्रेन के अटैक्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए. Yes. This is the importance of knowing the importance of migraine auxiliary treatment, so that basically primarily we can treat the complaints. Okay. Yes. इसलिए हम बोलते हैं कि माइग्रेन के अंदर ऑरा इज इंपॉर्टेंट. कभी कभी कोई पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मेरे को क्या है, आज बहुत लग रहा है कंफ्यूज, आज मैं शायद मीटिंग में जा नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड ही गोज एंड स्लीप्स. There's a Yes. lot of confusion before migraine attack. That is also a remedy. Patient will tell you something. Make sure that you basically try to ask what is the aura, what are the symptoms in prodrome, or what is the symptom during migraine, and the migraine hangover symptom. You will get some symptom. This is a very, very important symptom. इसलिए हम बोलते हैं ना, when to consult a doctor. Yes. तीन चीज ध्यान रखिए. When there is unusual migraine symptom, वेरी वेरी या अनयूजुअल मतलब इतना उसको हेडेक होता है स्मेल से, परफ्यूम से, लाइट से, के बाय थिंकिंग ऑफ दैट ही स्टार्ट गेटिंग हेडेक. दैट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू सी अ डॉक्टर. और व्हेन द सिम्पटम्स आर वेरी सीवियर, ही कैन नॉट कंप्लेन. दैट्स व्हाई इन एलोपैथी मेडिसिन देयर इज अ पेन किलर विद मेटाक्लोप्रोमाइड. वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए, डोमपेरिडोम देते हैं साथ में, वॉमिटिंग भी ना और ये हो. बट इतना सप्रेस हो जाता बेचारा पेशेंट, आता फिर स्टेरॉइड्स खा के हमारे पास, या वो हेडसेट करके नई दवा ये अभी, and the patient is so bad and said मैं एक भी दिन नहीं खाया ना तो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती. Yes. That's a time that he has to show a doctor. और उसके आगे एक symptom and there is loss of sensation. He does not know what is happening in the body. उसको लगता है यार ये बहुत कड़क लग रहा है, यहाँ बहुत हार्ड लग रहा है. There is loss of sensation and that is a time he has to consult a doctor. Right. Okay. Yes. Whatever. One thing I want to ask you कि आपका जो एक्सपीरियंस, तो हमने सुना कि माइग्रेन में आपने काफी सारा काम किया है, पूरी क्लिनिक खड़ी की है और काफी सारे रिजल्ट्स आपको मिले हैं. लेकिन कोई ये जो आपने प्रोड्रोम और हैंगओवर और ये जो एक अप्रोच आपने सिखाया है, इसके अलावा कोई पॉइंटर्स है स्टूडेंट्स के लिए या न्यूअर प्रैक्टिशनर्स के लिए कि वो उनको ध्यान में और रखना चाहिए जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं या ट्रीट? अभी मैंने बताया कि किताब में लिखा है कि
persons getting migraine headache because of simple light touch anything, मैंने बताया those persons are very sensitive persons. Okay, sensitive personality who gets excited very easily. Okay, एक sensitive आदमी excite जल्दी होगा ना. Yes. Okay, so we have a beautiful rubric in our repertory. Excitement aggravates. Yes. Okay, and I don't know exactly what remedies are there, but few remedies, because I have been treating migraine so in and out. कुछ रेमेडीज उसमें ऐसी लिखी हुई है जो एग्जैक्टली मैच करती पूरा जो मैंने पढ़ाया आपको. आप लिख सकते हैं रेमेडीज भी. एकोनाइट, चामोमिला, कोलोसिन, इग्निशिया, नक्सोमिका, फॉस्फोरस, पल्सेटिला. ये रेमेडीज उसके अंदर है ही है, होना चाहिए. ये बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी, ये बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, ये रूब्रिक आपके लिए बहुत काम में आएंगे. Exactly. Is given in rubrics in the very important remedies are Naxomica and Coffea, as you said. Yes, Naxomica and Coffea. अब उसको सिर्फ आप एक ऐड कर लेते हैं सेंसिटिव पर्सनैलिटी. अब मैं आपको सेंसिटिव पर्सनैलिटी बता सकता था रूब्रिक में, बट अगर आप देखेंगे रूब्रिक ऑफ सेंसिटिव पर्सनैलिटी विल हैव अबाउट 250 to 300 remedies. Yes. But the rubric of excitement would only have about 50 to 60 remedies. Yes. Okay, that's why if you are basic, if as a doctor, as a student, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊं ना तो आपको बहुत इजीली याद रहेंगी. अब होम्योपैथी के अंदर मैं आपको और सिंपल कर देता हूं. अब वो एक्साइटमेंट रूब्रिक का आप देख लीजिए, द पेशेंट इज हॉट. ओके, तो हमारे ड्रग पूरे चेंज हो गए. अब हॉट रेमेडीज उसके अंदर सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट वाले कौन सा आ जाएंगे? चामोमिला, पल्सेटिला, ब्रायोनिया, जेल्सेमियम, ओपियम. यस. और उसी को हमने चिली कर दिया तो एग्जैक्टली हमारा रेमेडी कम हो जाएंगे. उसके अंदर फिर क्या आ जाएगा? एकोनाइट, कोलोसिन, इग्निशन, नक्सोमिका, फॉस्फोरस एंड कॉस्टिको. ठीक है, मेरे पास तो प्रोग्राम नहीं है, बट मैं जो भी मुझे समझता हूँ मैं बता रहा आपको. डॉक्टर वर्षी, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी. सही बात है. अब उसके अंदर चिली के अंदर आप डाल देंगे मून फेस तो फॉस्फोरस सबसे फर्स्ट आ जाएगा. ओके. अब मैं आपको और एक मजा की बात बताता हूँ. ये डोंट प्रैक्टिस दैट इन योर प्रैक्टिस, बट और एक चीज, अगर आपको पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरे को सवेरे उठते तो हेडेक होता है, मेरे को लाइट से प्रॉब्लम है, मेरे को ओडर से प्रॉब्लम है, मेरे को डर से हेडेक होता है, मेरे को हर चीज से हेडेक होता है, और अगर आपने रेपेट्राइज किया तो मतलब कौन सा ड्रग्स जाएंगे? फॉस्फोरस, नक्सोमिक, इग्निशिया, एकोनाइट. मतलब ये रेमेडी काम करनी है. रिमेंबर दिस रेमेडी हैज टू वर्क. बट ऐसा मत करिए. अगर आप पूरे सिम्टम मैंने जो बताया और उसको रेपेट्राइज कर देंगे, आप अबाउट 12 सिम्टम्स आई हैव टोल्ड यू. Yes. अगर वो 12 के 12 सिम्टम आपने रेपेट्राइज कर लिए ना, जो मैंने बताया ना, मेरा हस्बैंड कांच का सामान हो गया है, उसको बहुत ठंडी हवा में हेडेक होता है, गुस्सा आया तो हेडेक होता है, बहुत एंग्शियस रहा तो हेडेक होता है, उसको बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हो हेडेक होता है, खाना नहीं खाया तो हेडेक होता है, घबरा गया तो हेडेक होता है, पेट खराब रहा तो हेडेक होता है, स्मेल आए तो हेडेक होता है, लाइट आए तो हेडेक होता है. पूरे सिम्टम आप रेपेट्राइज कर देंगे तो वो 4 ही ड्रग आएंगे, फॉस्फोरस, नक्सोमिक, इग्निशिया, एकोनाइट. और ज्यादा जाएंगे तो सिलिशिया, बेलेडोना भी आ जाएगा और कॉफिया भी आ जाएगा. This is the beauty of homeopathy mathematics. You know, sometimes we felt that allopathy अच्छा है, but homeopathy इससे ज्यादा अच्छा है. हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ the most important presenting symptom लेना है. अगर आपको लगता है कि वो कॉन्शियस सिम्टम नहीं है तो एटलीस्ट एक्यूट अटैक अपने जेब में रखेगा जी, कि आपको जब भी सर दर्द हो तो आप ये जेब में रखिए. यस. और उससे अगर उसको फर्क पड़ गया है, नेक्स्ट टाइम फाइटम देना उसको. एग्जैक्टली. और अगर उसको फाइटम से फर्क पड़ गया फिर कौन सा रूब्रिक लेंगे हम? पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब जब भी आपकी दवाई रखता हूँ ना, मेरे को लगता है मेरे को हेडेक नहीं होगा. वो भी इसी इफ योर रेपिटरी इज फैंटास्टिक और आपको लगता है पेशेंट फाइटम में साला ऐसा बोल रहा है कि इसको हेडेक ही नहीं हो रहा है. जी एंड सर. देन अभी ये रेपिटरी पार्ट है. शुड आई टेल और शुड आई नॉट टेल? यस यस यस, यू कैन सर. तो उसमें एक रूब्रिक है, बट वो फाटक रेपिटरी में है. उसमें रूब्रिक बहुत अच्छा है डॉक्टर वर्षा, सपोर्ट एमुलरेट्स. सपोर्ट एमुलरेट्स. ओके. और पता है उसमें कौन सा ड्रग है? जब हम माइग्रेन में बहुत कॉमन ड्रग यूज करते हैं, नेट्रमीर, वो सबसे पहले उसके अंदर है. उसके अंदर फेरम मेटालिकम भी होगा. फेरम मेटालिकम मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, एग्रेवेशन, बहुत एक्साइटमेंट ना, मेरे को नहीं बोला हेडेक शुरू. उसके अंदर देखो काली कार्ब भी है, सी दैट काली कार्ब भी है. मेडिसिन इज काली कार्ब. हमने काली कार्ब बताया था आपको भी एलएनएस की नोट में, उसमें काली कार्ब भी है. उसके अंदर नेट्रम कार्ब भी है. यस सर. सी हाउ होम्योपैथी, अगर आपका एक रेमेडी सही बैठेगी तो सब सिम्टम वही बैठने वाले हैं.
जी सर। कैलिकार्ब भी, फेरम मेटालिकम भी, नाइट्रम कार्ब भी, नाइट्रम म्यूर भी, एंड आई थिंक उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी है। यस यस सर। ओके, अब फॉस्फोरिक एसिड को हेडेक क्यों होगा? ओवर सेंसिटिव भी है और इमोशनल भी है। फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे डॉक्टर साहब, रोने मेरी की वजह फर्स्ट ईयर से। में गर्लफ्रेंड थी, बट अभी फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते किसी और की होगी बोले, तब से यस मेरा हेडेक शुरू हो गया। दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। यस। See, homeopathy becomes very easy when basically your approach and your understanding of remedy changes. You know, जी आप हमेशा एक ही चीज घोटते रहेंगे तो होम्योपैथी में शायद मिस्टेक कर दे, बट आपका अप्रोच ही हाउ द रूब्रिक्स आर रिलेटेड, आप फाइटम दे रहे और पेशेंट बोलता है मेरे को अच्छा लग रहा है, रेमेडीज आर सेम एवरीवेयर, आइदर यूज फाटक और कंप्लीट और यस मॉफी, एवरीथिंग इज सेम, और यस पूरे आपने रूब्रिक्स को भी रेपेटाइज कर दो, ड्रग सेम ही आने वाला। यस यस सर। सो अभी देखिए ये मटर मेडिका में इफ आई गो वर्षा डेट आई थिंक, आई नो सर, मतलब इट विल बी एक्चुअली इतना सब सुनने के बाद हमें भी लग रहा है कि 1 hour इज वेरी वेरी लेस टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। most important, Dr. Varsha, whenever I am talking, I want, whenever I'm taking a seminar, that's why I've completed 200 webinars. यस I सर। show some cases actually ठीक हुए हैं, जी then I start speaking. यस So the patient, that the audience have a confidence, he has cured, he has shown black and white, 25 साल का migraine, and one dose and he's got out of it. यस So if I tell you, ठीक है, अभी सर बोले तो ठीक है, but if I show that case, it becomes a very very interesting thing, and that's why whenever I say whenever you want to prescribe glonine, यस सर। of course it has the congestion now, but glonine has one of the beautiful, patient बोलता है क्या बोलेगा glonine का patient, डॉक्टर साहब आपने पापड़ देखा, पापड़ जब गलती से अपने पापड़ पे बैठ गया हाथ रख, कैसी कड़कड़ आवाज आती है, वो आवाज मेरे ब्रेन में आती है, क्रैकलिंग सेंसेशन इन ब्रेन, दैट्स ग्लोनाइन। वो डोंट लुक फॉर द बस्टिंग हेडेक एंड प्रेसिंग हेडेक, वो सब बोलने वाले, यस बट ये सेंसेशन ग्लोनाइन बोलने ही बोल, डॉक्टर साहब मेरा सर इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है सर के पकड़ के रहो पूरा खून जमा हो गया, फिर बैठना पड़ता है, दैट्स ग्लोनाइन। द यस पेशेंट फील्स द हेड इज सो हेवी, इट इज फुल ऑफ ब्लड, यस दैट्स ग्लोनाइन। राइट। ओके, Yes, sir. Sir, if you allow, can we take few questions from the audience? या प्लीज। So, Alexander Mello is telling, hello, looking forward for the webinar. Thank you, Alexander. Barbel Weber, hello. So, hello from both of us. Nagavani Varsha, they Patil. are all my international students who are following me. Okay. I welcome you all, the students of Sir, because I'm very happy you all joined on my channel. Nagavani Patil, hello, good evening, ma'am. So good evening to you. Alexandra Mello, doctor, please translate a bit, as there are many viewers that only speaks English. Yeah. I can understand, but it has been made for the both this way, that is layman people as well as the homeopathic students. But Yeah, definitely, let me answer this yes, question. yes, Alexandra, yes, hi, nice hearing from you. That's why, Alexandra, whenever you told no ke take a seminar both of Indian and foreign students, that's why I did not take, because in India we have to speak some Hindi. That's why full English I cannot speak. That's why I don't mix the seminars of international students and the Indian students. That's what Dr. Alexander. yes. But sir, we can plan for pure webinars in the future if you are Yeah. comfortable, so that we can only go with the international students as well. So that would actually help the Alexander. Yeah. Patel Mayur, good. Thank you for appreciating our work. LA Robin, thank you for presentation on this useful topic. So, sir, do you want to answer this? He just he said it is very useful topic for, and you actually encountered the same through your knowledge. Okay. LA Robin. And Dr. Haresh R. Patel, he is my known, and he's saying nice. Harsh Chudasma, nice. LA Robin, if the time permits, he is asking recommendation for the migraine right-sided at the base of the skull, extending from shoulder to right side of the head. Etiology, CSF leak after epidural for delivery of the baby. What we can do? See, normally she's Lisa Robbins. Yes. Yeah, Lisa she's Robbins. also one of she's one of my internal students. So Lisa, basically this is because of the compression. The CSF, there's a compression symptom, there's a compression in the brain. So basically in these type of cases, we have to see the remedy which is compressing that part of the brain.
the remedies which basically will help you in these type of complaints, where there's a compression and there's a pain. 3-4 remedies are very, very useful. You must remember that. Especially, see, you have written the side also. Right So side. first, yeah, side. So whenever you have this type of patients and the side is very prominent and that's because of the compression, so you can write down few of the remedies. The first remedy you should think about is, of course, everybody knows that remedy, lycopodium. Yes. But especially if it is right-sided, compression, because of compression, 3 remedies very important. First is lycopodium, second is apis mellifica, third is pulsatilla, and fourth, though rarely used sometimes in headache, crotalus horridus and belladonna. Okay. Yeah. And he says that it is constant stretching for hours. Can you talk a bit about the rubrics as well? What was the question? I don't know. Alexander is asking, it is constant stretching for hours? I think we have talked about that medicine, and that's why he is answering. And Yeah. can you talk about bit about the rubrics as well in the migraine cases? I have already spoken about the rubrics, basically I've already told in our webinars also that excitement I basically take for that rubric entry point. Now, excitement is not only that excitement rubric, then you have to start defining that rubric. When is the patient excited more? Yes. For example, I'll tell you, sometimes, what happens, the patient comes and tells us, okay, sir, whenever I have something very bad news, okay, I have had a case where the patient says that my son was expecting that he will top in the exam, but he came third. For me, that was a very bad news because I had worked very hard. So the remedies becomes excitement from bad news. Then you have gelsemia, vignesia, and calcarea. Yes. And then you have to start defining rubrics. This was a very 1-hour talk, so I just gave a broad idea. The patient says, "I'm so excited. I'm so excited because in confusion I become excited." The remedy becomes chocolate. And the patient comes and tells you that I'm so excited, I'm so nervous. Then the remedy becomes Aconite napellus. And the patient says, I'm so excited because of the pain, the headache starts. The remedy becomes Aurum metallicum. The patient says, I'm so excited that my heart starts pounding. It is like violent palpitation. And then you have lilium tick, nitric acid, and cocculus and a cactus. So there are a lot of combinations. I can start the whole mathematics, and Varsha would have to extend it for hours now. Sir, I can extend. It's up to you. That's not the problem. I'm learning a lot of things from you as well. Yeah, you can have some questions, Dr. Varsha. Yes, sir. Ali Robin is asking, my question above was migraine after the CSF leak, especially before and on the first day of the menses. Specifically, he has mentioned that. So whatever you have explained for the lycopodium and all that remedies, but he has then explained that it is on the first day of the menses and before the menses only. Yeah. So basically, if you take this symptom for prescription, now if you go in the repertory, and they are basically, if you take a generalized symptom, either you take menses before aggravation or after aggravation for generalized symptom, or you can take a particular symptom for headache also. So in this case, if the modality is basically related to hormones, then the remedy might change. Okay. First of all, you have to understand, is this episode the patient had before the operation of CSF leak also? That is also important. So if you say that before menses aggravation, the CSF compression symptom, then the remedy would be, I'll now club the remedies and I'll show you the remedies which basically come very, very close to this type of complaints. And those are, if you repetize both, one remedy that will come, that is calcarea carb. Okay. Okay. And Dr. Lisa, if you have seen cases of hydrocephalus also, most of the cases of hydrocephalus also resolve to calcarea carb. Okay. Because of the pressure symptoms. Other remedy that you have to compare in this complaint, the second remedy is kali carb, third remedy is pulsatilla, fourth is cuprum metallicum, the fifth is, I think, graphitis. Okay. Sir, Santosh Naravar is saying hi to you. I think you might know him. Yeah, he knows me. Dr. Aisha Sayyed, hi, good evening, sir. Might you know that? Yeah. And Barbel Weber, I don't understand the language he has written, so I cannot tell you. Dr. Barbel, you can ask me on the WhatsApp, I'll tell you the answer. Yes. Kavita Pandekar, hi. So, hello from both of us. LA Robin, no, patient had no symptoms until the CSF leak. So, yes. So that's important. Then you have to take for this for prescription, Dr. Lisa. Yes. Whatever I told you.
Sanjay Rohra, thank you, doctor, for a wonderful explanation. Please, could you recommend any book to have in-depth understanding of migraine and with reference to the miasms? See, all books, basic books in homeopathy. If arsenic album has fastidiousness, has anticipation, has the what you call cleanliness, it was 200 years back also and now also same. So basic books of mater medica you have to read, and don't read books of therapeutics of migraine में ये दवाई है, headache में ये दवाई है, and GIT में ये दवाई है, diarrhea के लिए दवाई. Don't read the basics books. What I used to read, Allen's keynote start with, then start with Clark mater medica, Kent's and Boric. Read this day in and day out. Whatever, as I always say, you are attract your own tribes. आपको मैच होना चाहिए कौन सी बुक में मजा आ रहा, जो बुक में मजा आ रहा हो पढ़िए. सब बुक में सिम्टम सेम है और जो स्टॉलवर्स ने लिखे गए उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. Exactly. वही पढ़िए, आपको रिजल्ट आना है. जी अब मैं भी इतना मैटर का बोल रहा हूँ, याद है, बिकॉज आई एम बी रीडिंग एवरी डे इन द पास्ट 20 years. Right. Okay, so there is no shortcut. Keep on reading, keep on understanding, you know. Yes, sir. Sir, Barbel Weber, he has translated the thing. Certainly very interesting. Unfortunately, have not understood so much. Thanks anyway. So sorry, Barbel, we actually arranged for the peoples who are not knowing homeopathy over here. But soon we can plan for only English session for you. So if we do that, please stay tuned with sir or with our channel. We'll definitely going to plan with the sir again. Sir, one last question from my side. What you suggest to a new homeopaths, what things they should keep on their mind while treating the cases like migraine or any other cases in their practice, and how they should be more confident with the homeopathy? Yes, so see, for all homeopaths, in fact including me also, the most important thing for treating any case or entering case is reading. Yes. Reading your literature is very important. What happens, you know, the problem starts when you come out of the college, and then you are thrown to various type of what you call ways of practicing, different type of schools. Then you think that that doctor is very famous and he has taken a lot of lectures. You try to follow him. After 3-4 years, you find career, I'm not getting results in that, and then you shift to some other doctor. Yes. After 8 to 10 years, you feel that what I had knowledge was important. Why did I waste my time? Yes. And you land up in no man's land. Have confidence in yourself. Keep reading. Study everybody, but follow your own instincts. It is very easy to say, but follow what you feel is right. एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम दवाई देते हैं ना, अंदर से लगना चाहिए कि दवाई काम करने वाली है. Yes, exactly. I had a fantastic case of interstitial lung disease post-COVID. The whole lung was fibrosed. Yes. My assistant doctor took the case. I told the doctor, we are giving this remedy and this patient will be cured. Oh. That doctor had come from, I don't know, somebody, sir, how can you say a case of fibrosis, post-COVID, whole lung 80% gone, how can you say before, I'll tell you, give this dose, we'll do a CT scan after 3 months. The patient came after 3 months, the whole lung was normal. We have the reports before and after CT scan, so that is the confidence if you can only have by reading. For example, most of the doctors here would prescribe Natromur for headache because patient bola jab bhi main go in the sun I get headache. So we have Natromur. Now I will tell you Natromur how to prescribe. The patient gets up in the morning and say, Doctor, मुझे लग रहा है को हथौड़ा मार रहा है. मैं फिर सो जाता हूँ जाके. That's Natromur, and that is only Natromur. Oh. That is homeopathy. He says, the child says, Doctor, sir, मैं जब लिखता हूँ ना, मेरे को लिखना नहीं है. मैं जब लिखता हूँ ना, मेरे को बहुत हेडेक होता है. मम्मी बोलते रहे ये बेवकूफ बना रहा है. But if you have headache in the temples while writing, the only remedy is Natromur. Oh. In fact, if you have headache, especially पेशेंट अगर अक्सर मुझे ऐसी यहाँ पे हेड होता है, मैं ऐसी शांत आंख बंद करके बैठ जाता हूँ. मुझे हेडेक बहुत अच्छा लगता है. Which is the remedy? I think Natromur. But more important Natromur, you will be surprised, the remedy is Natromur and Chelidonium. Chelidonium. Which we have never prescribed in our life. Exactly. That is how you have to understand and read your matter medic, you know. Yes. पेशेंट बोलता है मेरे को इतना पेन है, लगता है पूरा ब्रेन यहाँ से पूरा बाहर जाए, गिर जाएगा, इतना मुझे पेन हो रहा है. द रेमेडी इज सिंपल एकोनाइट.
अब वर्षा होम्योपैथी मटेरियल एमएम मत पूछे, मैं शुरू हो जाऊंगा तो बंद नहीं पाऊंगा। सर So उसके लिए मुझे स्पेशली आपका टाइम चाहिएगा। so this is Before to basically learn the new about that. homeopath is read and have confidence in your prescription. You will fail. I Yes. also failed today. Yes. जितना आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया ना, उतना तो मेरे पास फेलियर है। जी। जितना आपने पेशेंट नहीं देखे ना आज तक, मैं इतना फेल हो चुका हूँ प्रैक्टिस में, जी। तभी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी सर। तो बी कॉन्फिडेंट होगा। और हैनीमैन ने क्या बोला है, आखिरी में द हैंड ऑफ गॉड इज हैज टू बी विथ यू। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बोलता है ना, डॉक्टर मेरे असिस्टेंट टेस्टिंग करते 2 घंटे, बोले सर आपको सिम्टम कैसे बताया पेशेंट को, मतलब पता नहीं, मेरे को आगे फट से सिम्टम बोलते ड्रग आ गया उसका। सो दैट इज योर ऑरा ऑल्सो ना, ऑरा इज इम्पोर्टेंट ने क्या बोला, और आपका और ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट ने बोलना ही चाहिए आपके सामने आके, कीप रीडिंग। ओके सर, वन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आप इतने सालों से आपकी जनरेशन होम्योपैथिक को सर्व कर रही है, कभी भी आपके मन में, जैसे आज के लोगों को आता है ना कि होम्योपैथिक नहीं करेंगे मतलब नेम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कभी भी आपके मन में ये डाउट आया सर आपके आपके कैरियर के थ्रू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूअर कमर यस अभी आई विल नॉट गिव अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर के नहीं आया, बट ये हमेशा बोलता था, जैसे मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मुझे लोग बोलते होम्योपैथी क्या देने वाली, होम्योपैथी में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता था आपने होम्योपैथी को क्या दिए, आपने क्या दिया होम्योपैथी को, तो आपको देंगी वो। एंड सेकेंड थॉट क्यों नहीं आया, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब हम एमएम पढ़ते थे ना, तो फादर है, मदर है, मेरे सिस्टर, शी आल्सो डॉक्टर, बोलते डॉक्टर साहब, बोलते अब देखा तू बहुत नमक खा रहा है, ये नेट्रोमूर में है, रैन में, इसमें, तो ऐसा फिर जाके पढ़ते थे हम लोग। तो मैं बोला, फिर आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर। So I used to teach 6 to 7 first year, 7 to 8 second year, 8 to 9 third year, and then go to clinic. तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि कब टाइम निकल गया, और मेरे को I started treating cases, so टाइम ही नहीं मिला सोचने का। बट डेफिनेटली बहुत सारे होम्योपैथ्स को दिमाग में आना चाहिए। बट आई वुड ओनली टेल यू वन थिंग, जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। यस। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हम पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। सर बहुत सही बात बोली आपने। तो आप सरस्वती जी को भी ध्यान रखिए। एंड आई डोंट नो, होम्योपैथी मुझे तो बहुत मजा आता है, इट शुड बिकम अ हॉबी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे आप स्क्वायर पे खड़े और एक ने बहुत हॉर्न मार रहा है, अपने पागल है, ये ड्रग, एंग्री पर्सनैलिटी, ये ड्रग में आना चाहिए। सो यू कीप ऑन रीडिंग एंड मेक अ ग्रुप एंड स्टडी, एक को भाई ये ड्रग दे दो, ये ड्रग का सिर्फ कैलकुलेट, आपको सिर्फ थ्रोट ही पढ़ना है तो थ्रोट ही पढ़ के आए। पॉलीक्रेस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू रन टू रेयर रेमेडीज, उसने बोला, इसने बोला, रेयर जंप जंप करके आप रेयर बन जाएंगे। यस, पॉलीक्रेस्ट में सब कुछ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल देखेंगे, स्किन के अंदर मुझे बहुत लोग पूछते हैं, आई हैव टोल्ड यू स्किन सिम्टम्स ऑफ सिकुटा, कालिकार, कैलकेरिया, आप सो रेयर सिम्टम, मुझे लोग लिखते हैं सर ये कहाँ से आपने पढ़ लिया, कहीं से नहीं पढ़े, कैंट में लिखा हुआ है, क्लार्क में लिखा हुआ है, बट आप लोग, आपको सिर्फ पता है कैलकेरिया का, आप फेयर, फैट, फ्लैगी, कॉन्स्टिपेशन, पसीना आता है, गीला रहता है, कैलकेरिया का आप दे दो। वैसा नहीं है, पूरा पढ़िए, पॉलीक्रेस्ट पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। Whenever I'm teaching, I'm taking mathematical classes for the third year, final year on Zoom. I have about 50 to 80 students attending. So I keep teaching and keep reading. So automatically मेरे को याद हो जाता है. It's like that. Yes. Sir, few compliments are there. Can I just tell fast? Compliments are like adrenaline. You must give some. Dipti is saying very nice, sir. Happiness account is saying wonderful advice. Thank you. Dipti, thank you, sir. Happiness salute, sir. So he's very impressed with whatever you have tasted today. Happiness, organ, mathematica and repertory, 3 legs, the most important. Yes, that's what sir is telling about. Happiness, very honest answer he has said. And happiness, again, is saying wonderful, Ma Saraswati and Bhagwan Hanuman. Yes. Yes. So, I love today's webinar and actually a YouTube live, which we have conducted today with you. I'm actually been in contact with you through one of your student, and she advised me, कि, please follow us, sir. But once I started following your page, I was actually very mesmerized with whatever content you are putting. So but I hope
You don't tell to every speaker that this way. No sir, no sir. Whatever I'm So you speaking. have to be a very plain answer. सर वो भी मैं बता रही हूँ क्यों mesmerize थी. आपके जो कंटेंट होते हैं वो 1 सेकेंड के 1 मिनट के जो होते हैं वो एक्चुअली बहुत क्लिनिकल होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. एंड इवन आई हैव सर्च्ड योर यूट्यूब चैनल एज वेल. कल ही मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया है. एंड आई फाइंड दैट द थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न बाय होम्योपैथ इज to know the exactness what is given in the medicine and what we have to visualize in the patient. That's why I'm very connected with whatever you say. And I'm very, very happy to call you on my channel. I think you have also been in a good state while talking to in our channel. And in the future also, I want you to come back to my channel with some different topics. Especially, I want you to teach us about the coronary heart disease and such type of disorders, which are actually very difficult for homeopath to understand and to treat in the daily regular basis. And hope आपको भी ये जो जितना भी टाइम हमने हमारे चैनल पे स्पेंड किया है और लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है वो आपको भी पसंद आया होगा. सर हमारे चैनल के बारे में अगर आप कुछ एक पहले इंपॉर्टेंट नोटिस मैं दे देती हूँ. जिन लोगों ने भी ये सर का यूट्यूब लाइव किया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक लिंक मैंने दिया है. डायरेक्टली वहां पर आप क्लिक करेंगे सर के चैनल को, आप डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं. आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं. तो रोज के बहुत क्लिनिकल टिप्स आते हैं, मैं खुद देखती हूँ इसलिए मुझे पता है. Q&A सेशंस भी होते हैं सर के, क्लिनिकल केस डिस्कशन भी होते हैं. तो जिनको सर से सीखना है, अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली दिस आर द ऑप्शंस यू कैन गो थ्रू एंड आप अपने रेगुलर बेसिस में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं इस तरीके से. Sir, last question. If you want to say something about our channel and approach which we have started to interact with the homeopathy. Yeah. So, see, basically, जो भी चैनल से मैं जुड़ा हूँ, those are all young homeopaths, you know, very savvy with the social media and computer. If you tell me channel चालू करना, so I am very stressed कि क्या होगा चैनल चालू करेंगे तो. Yes. So, I think you are very lively and enthusiastic, and see, जितना ज़्यादा आप students को rope in करते हैं ना, so automatically homeopathy grows. Yes. And you have a very good and smiling face. So keep that face with you. So that the aura you spread is absolutely very innocent and very naive aura. So that creates a good, happy atmosphere when you are talking or discussing with everybody. So that's the best part in your channel. Thank you so much, sir. And we are very happy to call you. And thank you from our team of Homeo Health. I'm very initial period of practitioner, but I actually learned a lot of things from you today. And I would suggest, I would actually going to tell this to my students as well when I go for a lecture on Thursday, and will share your points to them also so that they also take care of all. Which college you teach? Sir, I teach in Vadodara, Pioneer Homeopathic Medical College, and I practice in Ahmedabad. Okay, okay, fine. So we'll consider these points in our practice as well, and I will teach the students as well. So whatever they can help other peoples with the migraine, the more we can help, the more homeopathy will grow in India. So that's why I have started this channel to interact with the people that only other the alternative medicine is not homeopathy. It could be a mainstream system of treatment as well. If the people will know, then only they can try these medicines in the first basis. Yeah, sure. Thank you so much, sir. Okay, yeah. Thank you. Thank you so much. Be connected with us. Thank you so much, you. sir. Namaste. And for the viewers, please आप भी connected रहिएगा, subscribe कीजिए, forward कीजिए. इतना अच्छा सेशन सर ने लिया है, तो जितना आप forward करेंगे उतना ज्यादा लोगों को होम्योपैथी और माइग्रेन के बारे में समझ में आएगा. अब अगर आपको और कोई टॉपिक पे जैसे सीखना है, प्लीज आप मैसेज में लिखिए ताकि मैं और भी स्पीकर्स और टॉपिक्स के साथ अगली बार आ सकती हूँ. नमस्ते. Okay, yeah.